Good morning, students. I am Leena Yadu. In my previous video, I taught you what will happen if the sun took holiday. अगर सन छुट्टी पे चला जाए तो क्या होगा? When sun took holiday, suddenly darkness covered the earth. The squirrel stopped chasing its friend and ran home. The little plant couldn't grow, flowers did not bloom. The mother bird went back to its nest and couldn't collect food for its little ones. So, in previous video, I explained these three paragraphs. Let's continue with next paragraph. The bee couldn't find any honey because the flower didn't bloom. So it went back to its hive. The sun wasn't there, so the wind got stuck up the hill. Here, honeybee couldn't collect honey. Honey means nectar, फूलों का रस. इसे हिंदी में फूलों का रस कहते हैं. Honeybee were unable to collect nectar because flowers didn't bloom. So it went back to its hive. Here, hive means home of honeybees, मधुमक्खी का छत्ता. The sun wasn't there, so the wind got stuck up the hill. Stuck up means फंसा हुआ, हिंदी में से कहते हैं फंसा हुआ. So the sun wasn't there, wind stopped blowing. Men, women, and children stopped working. They opened their windows and said, "What happened to the sun?" It was very quiet everywhere, and the warmth of the sun was missing too. All of them prayed for the sun to rise. Men, women and children ने अपना काम रोक दिया और अपनी खिड़की खोलकर बाहर की ओर देखा और कहा, "What happened to the sun?" सन को क्या हो गया? It was very quiet everywhere and the warmth of the sun was missing too. चारों तरफ शांति थी और उन्हें warmth of the sun means सूर्य की गर्माहट को सभी मिस कर रहे थे. All of them prayed for the sun to rise. Here, rise means उदय होना. सभी ने मिलकर सन के उदय होने के लिए प्रे किया. The sun looked down from its abode. The stillness on the earth shocked the sun. The sun felt sorry. The earth seemed lifeless. This made the sun very sad, so he decided to stop his holiday and start shining again. Here, looked means to turn your eyes in a particular direction. Look का past participle है, हिंदी में इसे देखना कहते हैं. Down at a lower level means नीचे. Here, abode means home, घर. सन अपने घर से नीचे अर्थ की ओर देखता है कि चलो देखते हैं कि अर्थ में क्या हो रहा है. The stillness on the earth shocked the sun. सन अर्थ को देखकर शॉक्ड हो गया, आश्चर्य में पड़ गया. क्यों? क्योंकि सन के बिना अर्थ में शांति छा गई थी. Everyone stopped their activities. Here, stillness means stability, ठहराव, स्थिरता. सन के ना होने से अर्थ में सब कुछ रुक सा गया था, ठहर गया था. The sun felt sorry. सन को बहुत बुरा लगा. He felt sorry. The earth seemed lifeless. अर्थ जीवन रहित लग रही थी. Here, seemed means to appear. This made the sun very sad. इससे सन को बहुत दुख हुआ. So he decided to stop
his holiday and start shining again. तो सन ने यह डिसाइड किया कि अब वह अपना हॉलीडे उसी समय रोक देगा और फिर से स्काई में शाइन करने लगेगा. हियर शाइनिंग मीन्स टू बी ब्राइट, हिंदी में से चमकना कहेंगे. अगेन, अगेन मीन्स वंस मोर, हिंदी में से फिर से सन ने डिसाइड किया कि वो आसमान में चमकेगा, आसमान में शाइन करेगा. The plants grew and flowers bloomed. Bees and birds started singing. The river flowed joyfully and the wind blew. Mother bird was happy and everyone on the earth began to work. Indeed, the sun can never go on a holiday. The plant grew and flowers bloomed. Here, grew is the past tense of grow, means बढ़ना. Bloomed means खिलना. प्लांट बढ़ने लगे और फ्लावर्स खिलने लगे. बीज एंड बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग. बीज और बर्ड्स खुशी से गाने लगे. The river flowed joyfully and the wind blew. रिवर्स आनंदित होकर बहने लगे और हवाएं भी बहने लगी. Mother bird was happy and everyone on the earth began to work. मदर बर्ड खुश हो गई और सभी ने अपना अपना काम स्टार्ट कर दिया. Indeed, the sun can never go on a holiday. Here, indeed means रियली, वास्तव में. रियली सन कभी भी छुट्टी पे नहीं जाता है. सन कैन नेवर गो ऑन अ हॉलीडे. थैंक यू स्टूडेंट.